this is your co-host Neeraj Adhlakha. I am founder and director of Border Security Services. So today we are going to discuss on two topics, security management and parking management in events. So let's start with the security. Security is state of feeling safe and being free from worry, protection against the difficulties of life. This is what we call security. Security can be for your event, for your home, for your self identity. It can be anything. So let's discuss what is event security. Event security is the type of service that you can opt for while organizing an event to take care of the safety and security aspects of the event as well as the venue. So guys, when we are planning for security of an event, so we have to keep the aspect key. We are planning for the security of event as well as the venue also, because that is also our responsibility to take care of it. So let's start what are the aspects to keep in mind while planning an event security? We must include security strategies, risk assessment, threat, vulnerability, protection, and much more. And why security is important in events? Planning a successful event can take months or even years of careful planning and meticulous preparation. With all of this time and money invested for a single day or period, which is joyous event for sure, you certainly want things to go well and for your guests to be happy and safe while attending your event. Spending a few extra rupees to hire some private security for the big day is a great way to ensure that the days goes off without any unnecessary safety concerns. जब भी आप या आपका कोई क्लाइंट किसी भी इवेंट के लिए प्लान करता है तो उसके मन में काफी सारे आइडियाज होते हैं, काफी महीनों की उसकी प्लानिंग होती है, उसके सपने होते हैं उस इवेंट को लेके, चाहे वो एक वेडिंग इवेंट हो, चाहे वो एक कॉर्पोरेट इवेंट हो, चाहे वो कोई और तरह का इवेंट हो, उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं उस सपने को, उस इवेंट को लेकर अपने। तो बेसिकली हमें थोड़ा सा उसका पैसा, अगर हम उसका बजट जो है हम सिक्योरिटी पे एक प्रोफेशनल एजेंसी को हायर करके उस इवेंट के लिए प्लानिंग करेंगे तो वो इवेंट बहुत अच्छा जाएगा और उसका मतलब एक सक्सेसफुल इवेंट होगा वो। What are the types of events? Types of events are wedding events, corporate and huge crowd events, VIP celebrity protection. So ये तीन कैटेगरी इवेंट्स की हैं, हमें इसका सिक्योरिटी प्लानिंग भी इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। एक वेडिंग इवेंट के लिए जो सिक्योरिटी प्लानिंग होती है वो डिफरेंट होती है, एक कॉर्पोरेट और ह्यूज क्राउड इवेंट के लिए जो प्लानिंग होती है वो डिफरेंट होती है, और एक वीआईपी सेलिब्रिटी यानी कोई हाई प्रोफाइल डिग्निटरी है, कोई सेलिब्रिटी है, तो उसकी सिक्योरिटी प्लानिंग डिफरेंट होती है। तो हमें इन तीन कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी इवेंट का सिक्योरिटी प्लान करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद वेडिंग इवेंट और प्राइवेट पार्टीज फर्स्ट। So what are the reasons we include security in a wedding event or a private party? The reasons are so that we can keep unwelcome guests out, so that nobody can crash the gate and come into the event, keep your valuables safe, and there might be a reason your venue may require it. Sometimes it happens कि venue have a compulsory requirement कि if you are going to do event any if I take example of JCC Jaipur, अगर आप वहां पर कोई इवेंट कर रहे हो तो venue will ask you कि आपका security arrangement क्या है, what are the team you hiring, और वो appropriate है कि नहीं है, वो क्रॉस चेक करते हैं इस चीज को, ताकि आपके इवेंट के कारण उनके वेन्यू को कोई डैमेज ना हो जाए। It also offers protection to the parking, अगर आपके गेस्ट आए हैं वेडिंग में, उनकी कार पार्किंग में है तो वहाँ सिक्योरिटी रखते हैं ताकि एक चेक रहे, कोई गाड़ी में से कोई चोरी नहीं कर रहा हो, कोई वहां पर थेफ्ट नहीं हो, कोई मिसहैप नहीं हो। So this is the reasons why we include security in our wedding events or any private parties. So corporate event and huge crowd events generate a lot of return on investment for planners, companies, and venues. There are several reasons to hire private security for a corporate and huge crowd event, all with the safety of your guest in mind. A few reasons include
With the right practice, you can ensure the safety of the crowd and your team. See, कभी भी एक ह्यूज क्राउड इवेंट होता है तो उसमें जो आपका गेस्ट होता है वही इनसिक्योर नहीं होता, इवन आपकी टीम, जो मैनेजमेंट टीम होती है, जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो हैंडल कर रहे होते हैं सिचुएशंस को, वो भी इनसिक्योर होते हैं. तो विद द राइट प्रैक्टिस वी कैन इंश्योर द सेफ्टी ऑफ बोथ, लाइक गेस्ट का भी और आपकी मैनेजमेंट टीम का भी. Security keeps you covered in case of injury to guests, damage to venue, crowd will be in control, will cover the troublesome guest and any kind of unexpected situation. So this is the role of security, which is very useful in this huge crowd events and corporate events. It ensures guests don't stray into the artist stage, staff only areas or area reserved for VIP. So we have artists also, we have VIPs also in our events. So सिक्योरिटी विल इंश्योर कि वहां पर वही लोग जाएंगे जिनका उस एरिया में एक्सेस होगा, अदरवाइज ऐसा नहीं कि कोई भी गेस्ट उठ के किसी भी एरिया में घूम रहा है. सो दिस इज द रोल ऑफ सिक्योरिटी इन दीज काइंड ऑफ ह्यूज क्राउड इवेंट्स. Managing the queue at entrance will help the organizers to have a check on their self. Like we have some ticketed events also, और जिसमें I discuss like कि जिसमें return on investment planner का बहुत involve होता है. तो अगर हम सिक्योरिटी रखते हैं तो एंट्रेंस में ऑर्गेनाइजर्स को एक सेल चेक करने का एक मैनेजमेंट टीम मिलता है. Note, however, with any live public gathering, there is always the risk of something going seriously wrong. You and your team have to be prepared to respond at a moment's notice. See, whenever you are going to handle any kind of live public gathering now, तो कुछ भी हो सकता है. सो यू मस्ट बी, यू एंड योर टीम मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. वहाँ आग भी लग सकती है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, और आपको एकदम क्विक डिसीजन लेना होता है. आई सजेस्ट कि आपको अपना जितनी भी टेक्निकल टीम है वो अपने लिस्ट में आपको अपने कॉन्टैक्ट में रखना चाहिए, ताकि आप उनको एट द शॉर्ट नोटिस मूवमेंट यू कैन कॉन्टैक्ट दैम, और आपको सिक्योरिटी को अपना कॉन्टैक्ट में रखना चाहिए ताकि हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें. Let's talk about VIP celebrity protection. First of all, VIP celebrity protection is only related to, like, if you are into artist management, or you are going to handle any election campaign of any politicians, so or any high profile dignitary. So this is only the planning which you have to keep in your mind while doing that kind of events. So why it is needed? Because everyone want to take the autograph and a selfie from his or her favorite actor, actresses. Everybody want to shake hand with the prospective leaders. So this can be an incident which can happen in these kind of uncontrollable crowds event. And we have like in the case of VIPs, we have serious threats such as kidnapping or assassinations can be the reasons bodyguard keep them protected. So in that case, we just have a private protection of that person only. We are not looking after the planning of any crowd management or anything else. Suppose you got a work for a artist management of a wedding. So you are not going to take care कि वहाँ पर बाहर क्या हो रहा है, कौन गेस्ट अंदर आ रहा है, वो उस गेस्ट का, क्लाइंट का इनवाइटेड है कि नहीं है. दैट इज नन ऑफ योर रोल. आपका काम है आर्टिस्ट मैनेजमेंट. आपको आर्टिस्ट मैनेजमेंट की सिक्योरिटी प्लानिंग करनी है. आप अपने आर्टिस्ट को कवर करोगे, वो वहां परफॉर्म करता है, उसको लेके जाओगे और उसको लेके आओगे. दैट इज ओनली विच यू हैव टू प्लान ड्यूरिंग द प्लानिंग ऑफ एनी VIP सेलिब्रिटी प्रोटेक्शन. यू हैव टू जस्ट cover the security of that individual. So there are few images which I put over here for better understanding. First image is like is a celebrity Salman Khan that is getting covered by the bouncers in one of the private party. So they are taking care कि हर कोई जाके उनसे हाथ नहीं मिलाए, सेल्फी नहीं ले. The second image is of airport. Amir Khan is a celebrity. He's coming from Mumbai, and bouncers are covering him to sit safely in his car. Okay. The third image is a movie promotion image. Isme, I think Jacqueline is there and Varun is there, and they are doing any promotion of their movie at Patrika Gate, and security is taking care of
cover of their celebrities and they are ensuring कि वो safely अपना गाड़ी में बैठ जाएं. Now the important thing is that if we are planning, what we can propose to our client, like what security we can propose to our client. So before proposing the number of team category to the client, you must do the assessment by evaluating the need and budgets of the client on the basis of discussion in your pre-meets. Like आपने क्लाइंट के साथ बैठे हैं, मीटिंग करी है, डिस्कशंस हुए हैं, तो आपको उसको सबसे पहले एवेल्यूएट करना है, उसके बजट क्या है सिक्योरिटी को लेकर, और इज ही रेडी अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर प्लानिंग फॉर दैट. तो वो भी मैच करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज इट विल बी ए मिस मैच. Client is ready to pay only a small amount and you are planning big for the security. So you have to keep that in your discussion and accordingly you have to plan कि आप अपने client से पूछोगे कि what he is expecting, what kind of security he is expecting, what are the numbers he is expecting. So in any kind of event, either it's wedding or it's any artist management or any huge crowd event. So the another thing which we can propose to our client is CCTV surveillance. If the venue is not having CCTV cameras, CCTV cameras, I think everybody knows, which keeps the third eye monitoring on us. So if the venue is not covered with that, we must propose our client to have a CCTV surveillance, to have a third eye monitoring, to track any kind of suspicious activity which is happening over there in the event. Fire safety. If the venue doesn't have sufficient fire safety equipment or fire staff, we can propose our client to have few fire equipments, fire marshals to cover the event. One thing is very important while proposing to your client. See, if you don't have the experience of what kind of security is to be there in the event, never propose to your client. Ask to the professional, any professional agency. If you're coming up with, let's take an example. If you're coming up with a wedding in Hotel Rambagh, and your client is saying he must be having 700 guests, so he want the security. So first of all, talk to any professional agency कि we have a wedding, 700 लोग आएंगे, रामबाग में event है, इतने बजे event start होगा, इतने बजे खत्म होगा, तो what is your opinion कि कितना हमें guards, bodyguards रखना चाहिए. तो accordingly you will, जब आप बहुत ज़्यादा events में काम करेंगे तो आपको experience हो जाएगा कि like हाँ, professional agency ने 700 के हिसाब से this number of team बताया है. Now after a few months or few year, if you are again going to do the wedding in an Hotel Rambagh for suppose 1000 guests, so आपको idea रहेगा कि experience के साथ कि मैंने last time 700 लोगों का वहाँ पर wedding किया था, तो मुझे इतना security का requirement था उस venue के लिए, तो this is the venue requirement और this is the इतना guest को वहाँ पर, वहाँ से ये entry होती है, वहाँ से वो gate है, वहाँ से कोई gate crash करके आ सकता है. तो जब आपको experience होने लग जाएगा उस venue का, उस वेन्यू में जो गैदरिंग है उसके अकॉर्डिंग सिक्योरिटी का क्या स्कोप ऑफ वर्क है, तो आप नेक्स्ट आप प्रपोज कर सकते हो. बट इफ यू आर नॉट हैविंग एनी एक्सपीरियंस ऑफ दैट वेन्यू और ऑफ दैट इवेंट, नेवर प्रपोज अ टीम, बिकॉज इट कैन बी एन एरर लेटर ऑन. लाइक आपने प्रपोज कर दिया कि सर वी कैन हैंडल with the 10 numbers of security manpower and we will have a smooth functioning during your event, और बाय सपोज वो टीम कम पड़ गई, तो हो सकता है कि आपने जो प्रपोज किया वो आपके लिए एक फेलियर हो जाए. सो दिस इज व्हाट वी कैन प्रपोज टू आवर क्लाइंट. Someone was asking me ki what are the types of security, what are the categories. So here we are with security guard. You can check in the first image, a guard is checking the, he's having a under car detector. He's just detecting is there anything, कुछ मैग्नेट कार के इंजन में कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ भी लाइफ डेंजरिंग इक्विपमेंट या कुछ ऐसा कैरी तो नहीं हो रहा. सो दिस इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी वी हैव to check out the cars while entering the venue. This is just simply guards. They are escorting the guests to sit in the boat easily, तो कुछ उनको इंजरी ना हो.
These are bouncers which we have, which we can keep in wedding events and huge crowd events and VIP protection also. These are security officers. These are like same like bouncers only, but they are little bit more educated, little bit more experienced, and they are good looking guys. So just to have a good impression, if your the quality of event is good, you can hire security officer rather than hiring the bouncers. So it will give the good impression to the client and the guest also. This is personal security officers. These are armed guards, which we keep mostly in the VIP celebrity protections, and we keep in weddings also. Because अगर किसी wedding में काफी dignitaries हैं और क्लाइंट को थेफ्ट का अगर फियर है या कुछ ऐसा लगता है उसको कि कोई चोरी नहीं हो जाए, काफी गोल्ड मेरे गेस्ट पहनने वाले हैं, सो वी कैन कीप फ्यू आर्म गार्ड्स आल्सो जस्ट टू हैव अ टेरर इन द thefts or suspected guys. Okay, one more thing. These officers are having the weapon and they are licensed. Okay, we cannot hire anyone having the armed weapon. इनको गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिला होता है और हम इन्हें हायर करते हैं. These are darban, these are doormen, and these are basically used for a warm welcome at the entry. In most of the cases, they are hired in weddings. See, this is bullet marshals. ये मेरे ख्याल से आपने सुना नहीं होगा और इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. Bullet marshals are nothing. They are bouncers on bullet. Okay, bullet. This is Royal Enfield bike. Okay. कभी कभी आपके क्लाइंट की कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, उसको कुछ कॉन्वॉय क्रिएट करना होता है. लाइक सपोज कोई एनआरआई वेडिंग आप कर रहे हैं, ब्राइड या ग्रूम बाहर से आ रहे हैं एंड दिस इज अ डेस्टिनेशन वेडिंग. सपोज उनको किसी होटल प्रॉपर्टी में जाना है बट उनको बहुत धूमधाम से जाना है. लाइक दे वांट कि उनकी जो एंट्री है वेडिंग में, जो वरमाला कॉन्सेप्ट और जो ब्राइड ग्रूम एंट्री होगी वो तो डिफरेंट होगी. दैट इज यू आर गोइंग टू प्लान. बट अभी जब वो एयरपोर्ट से जब होटल में आ रहे हैं तो उनकी एंट्री भी बहुत धूमधाम से होनी चाहिए. तो वी कैन कीप दीज काइंड ऑफ मार्शल्स. इसमें हम बुलेट मार्शल्स एंड दिस जीप मार्शल्स वी कैन हैव एक कॉन्वे बनाते हैं जिसमें लाइक 4 बुलेट्स आर देयर इन द फ्रंट, 4 बुलेट्स. जैसे एक मिलिट्री कॉन्वॉय निकलता है वैसे ही हम अपने ब्राइड या ग्रूम को एक सेलिब्रिटी फील देते हैं कि व्हेन दे आर कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट टू द होटल. तो हम ऐसा रख सकते हैं अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट हो और अगर आपको लगता है कि क्लाइंट का ऐसा कुछ सोचना है तो. अदरवाइज इफ लाइक a wedding is going to be done in a small lawn and you are proposing your client कि सर आपका दूल्हा कैसे उसको कॉन्वे में लेकर आऊंगा. सबसे पहले आपको एनालिसिस करना है कि आपका क्लाइंट का वो चीज का बजट भी है कि नहीं है. आप उसको वो थॉट दे रहे हो तो वो बजट भी उसके दिमाग में होना चाहिए. If he simply needs a guard, then propose him guards only. Don't propose anything else. Otherwise, उसको क्लाइंट को आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा डिस्कशन में और आपको काफी प्लानिंग में टाइम लग सकता है. जीप मार्शल सेम, we can use it in convoy.